Welcome back to the Solid State Physics lecture series course 1. So in this lecture we are talking about the face-centered cubic structure. This is just a continuation of the previous two lectures. One was based on simple cubic and the second was on a body-centered, and now we are talking about the face-centered cubic structure. Face-centered cubic structure is that one shown over here, containing the red atoms at the corner of the cube and the green atom at the face of each cube. Okay, here is the first, one cube is shown here. Let's just analyze them one by one, the characteristics we just described in the previous case. First is about the number of first nearest neighbors. First nearest neighbors calculate करने के लिए we have to just look at this structure. इसमें एक x axis है, y and z axis here. The frame is shown. सबसे पहले तो हम identify करते हैं which one is the nearest neighbor. First nearest neighbors. अगर मैं इस पॉइंट से डायरेक्ट इस तरफ मूव करना स्टार्ट करता हूँ, then at a distance of a I will face one atom, while if I move a distance half along x-axis and half along z-axis, then again I face the atom at the face of this cube in xz plane. So this distance would be the distance, this one is for sure half of that and the half along z-axis. So 1 by a by 2 square plus a by 2 square whole square root is certainly less than the distance from this point to that one. By just applying the Pythagoras theorem over here, we get that the first nearest neighbor is the atom located at the face of this cube. ओके सो हमें अगर ये आइडिया हो गया कि फेस पे जो एटम हैं दीज आर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, so लेट्स कैलकुलेट देम कि फेस पे नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं. अगर हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे इस एक यहाँ पे प्लेन को, लेट्स से हम फर्स्ट x और z प्लेन में कैलकुलेट कर लेते हैं कि x z प्लेन में नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं. x z प्लेन में अगर हम मूव करते हैं तो एक तो यहाँ पे है जहाँ दोनों x और z एक्सेस पॉजिटिव हैं, और एक इसके बिल्कुल बैक साइड पे होगी क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, जो कि जिसमें x पॉजिटिव है बट आपका z नेगेटिव होगा. सो फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट थे वो 1/2 a by 2 positive along x-axis and a by 2 positive along z-axis. So ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट शो किए गए. सेकंड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके बिल्कुल बैक पे एग्जिस्ट करता था. The coordinate for that atom are 0 plus a by 2 and minus a by 2 because the z-axis is negative along that plane, xz plane में. इस तरह अगर हम अभी तक हम सिर्फ x और z प्लेन को ही एनालाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेन को एनालाइज किया, फिर एक जब z नेगेटिव हो जाता है, अब इस तरफ देखते हैं कि जब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उस तरफ भी एक प्लेन इसी तरह की एक क्यूब लाई करती होगी, तो उस केस में उसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस a by 2 एंड माइनस a by 2 होंगे. बोथ द प्लेन्स the coordinates x and z are negative, and also we have a cube just adjacent to the cube shown here in our left direction, in left side. So left side pe x-axis negative while the z-axis positive. So 0/2 minus a by 2 plus a by 2, minus a by 2 along x-axis and plus a by 2 along z-axis. So एक प्लेन में जो x और z की सिर्फ प्लेन को अगर एनालाइज किया जाए तो 4 आपके पास ऐसे एटम है जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ शो किए गए हैं 1 2 3 एंड 4. इसी तरह अगर हम एनालाइज करते हैं इस y और z प्लेन को,
y और z प्लेन में दोनों पॉजिटिव हों तो एक एग्जिस्ट करता है, एक इसी तरह इसकी बैक पे होगा जो जिसमें y एक्सिस पॉजिटिव है बट z एक्सिस नेगेटिव है। इसी तरह फिर दोनों y और z नेगेटिव हों तो एक वहाँ पे आएगा। और नेक्स्ट केस में जब एग्जैक्टली इसके डाउन पे, इस फिगर के बिल्कुल डाउन जो क्यूब होगी उसमें z एक्सिस पॉजिटिव है बट y एक्सिस नेगेटिव है, तो 4 वहाँ पे लाई करते होंगे। और similarly the 4 others lies in the plane of this x and y. So total number of first nearest neighbors are 12. What about the second nearest neighbor? Second nearest neighbor is the one lying at a distance a. यहाँ से इस a डिस्टेंस पे लाई करता है, ये आपका सेकंड नियरेस्ट नेबर है। पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग, नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग, सिमिलरली positive y axis के along and positive negative y axis के along, and also one is lying at our positive z axis at a distance a and at a negative a distance along z axis। तो 6 यहाँ से आ जाएंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ शो करवाए गए हैं कि एक दफ़ा प्लस आप ले लीजिए, एक दफ़ा -1 कर ले। Similarly +1 and -1, 0 0 and +1 0 0 -1. So second nearest neighbors are 6. Now calculate that कि हमारे पास atomic radius कितना आता है, क्योंकि वो atomic radius हमें packing fraction में required होगा। Let's first consider कि हम अगर एक face को यहाँ से consider कर लेते हैं, say the face just at front of this face centered cube। इसमें यहाँ अगर देखें तो एक पॉइंट कॉर्नर पे लाई करते हैं 1 2 3 and 4, और एक बिल्कुल इनके सेंटर में जो कि यहाँ शो करवाए गए 1/8 पार्ट हियर, 1/8 1/8 1/8 एंड द हाफ, यानी कि ये वाला जो एटम है इसको यहाँ पे शो करवाया गया है। वी नो दैट कि इस क्यूब की एक से इस साइड से लेके यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट्स a। हम क्यूब कह रहे थे, उसको हमने डायमेंशन उसकी जो है ना एक्सिस के अलोंग a रखी हुई है, सो इट्स क्यूब, सो ऑल द डायमेंशंस आर सेम, राइट। a डिस्टेंस यहाँ है, इसी तरह से a डिस्टेंस इस तरफ है, a डिस्टेंस एंड a डिस्टेंस लाइज देयर, while from point this to this one, I mean the first item at the cube at the corner of the cube, उसका यहाँ का जो डिस्टेंस है it must be radius r, and similarly from this point to this one, ये डिस्टेंस भी इसी तरह से r + r 2r या डायमीटर होना चाहिए, और यहाँ से फिर नेक्स्ट डिस्टेंस भी इस तरह से r है। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द कॉर्नर ओवर हियर इज r + 2r + r, so it's 4r। From this point to this one we have a distance of 4r, radius r, okay। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है और इसी तरह से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। अगर ये डिस्टेंस इस कॉर्नर से यहाँ तक 4r है तो ऑफ कोर्स यहाँ से इस कॉर्नर का डिस्टेंस भी 4r ही होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर a हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो वी हैव टू जस्ट अप्लाई द Pythagoras theorem। a² + a² is equal to distance from this point to this point, or simply a² + a² is equal to 4r, right? So a² + a² square root is equal to 4r.
जो कि 2 स्क्वायर रूट ए है. सो 4r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए. जस्ट सम करके स्क्वायर रूट कर लीजिए. सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज जस्ट 2a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जब आएगा तो ए स्क्वायर के साथ जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल होगा और बाकी आपके पास बचेगा 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 4r. सो यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहे तो दिस r इज गिवन बाय a over 2 into 2 स्क्वायर रूट. जस्ट सिंप्लीफिकेशन ओवर हियर. ओके, सो कीप दिस ओवर हियर. नेक्स्ट हम नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं. It's very easy to calculate the number of number of items in a unit cell. अगर हम इस एज को इस फेस को एनालाइज करते हैं तो इस फेस पे जो आइटम है उसकी हाफ कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में और हाफ कंट्रीब्यूशन साथ वाले में है. इस तरह इसके अपोजिट जो है उसकी भी हाफ एंड हाफ कंट्रीब्यूशन है. अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन और इसके अपोजिट वाले की कंट्रीब्यूशन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो 1 आइटम इज़ हेयर. सिमिलरली फ्रंट पे और बैक पे जो 2 आइटम है उनकी कंट्रीब्यूशन, अपर एंड लोअर की कंट्रीब्यूशन को अगर टोटल सम किया जाए तो वी विल हैव 3 आइटम्स ओवर देयर. लेकिन स्टिल अभी हमारे पास एक पेंडिंग है जो ये कॉर्नर आइटम्स हैं. वी नो दैट 1/8 कंट्रीब्यूशन हर एक कॉर्नर आइटम की होती है. तो वहाँ से एक बनेगा और 3 ऑलरेडी हैं. देन वी हैव 4 और वी हैव टू अप्लाई सम फार्मूला जो ऑलरेडी हमें नाउन है. इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ni तो 0 है. देयर इज़ नो आइटम जस्ट इनक्लोज्ड बाय आवर क्यूब. बिल्कुल इसके सेंटर में यानी कोई नहीं है जो इसका मुकम्मल तौर पर हिस्सा हो. देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ आइटम इन अ फेस सेंटर्ड. सो nf, okay, we know that there are 6 faces and each face has 1 atom. Then it's 6 and at the corner we have 8 atoms. At the edge there is no atom. Edge यानी इस edge को अगर एनालाइज किया जाए, if there is some atom at this line, then we have to include it over here. But in our given structure, the structure at hand, face centered, there is no atom at the edge of our structure. So ne भी 0 हो गया. 0 plus 6 by 2 plus 8 by 8, then we have this 4. That's what the total number of atoms in a unit cell are. So now calculate the packing fraction. We know that this packing fraction is given by an effective multiplied by volume of atom, volume of each atom divided by volume of the cube. 4 atoms are there, net atom 4 है. 4 by 3 pi r cube एक का वॉल्यूम है, उसको टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम आ जाता है डिवाइडेड बाई क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब है. अब हम इस r की जगह ये वाली वैल्यू प्लग कर देते हैं, देन सिंप्लीफाई करते हैं तो 74% ऑफ आर स्ट्रक्चर इज ऑक्युपाइड. दिस 74 शोज दैट हमारे पास जो ये फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है it's 74% occupied and rest is unoccupied. That's all about the face centered structure. Thank you so much. If you have any question, just do let me know in the comment section.